Bonsoir, c'est Dr. Ajay Sahani de Bharati Vidyapith University. Bienvenue dans notre cours de फ्रेंच पे गपशप. सो आज हम लोग पहले फ्रेंच में पढ़ाई करेंगे. ऑफ कोर्स फ्रेंच के बारे में बातचीत करेंगे एंड गपशप उसके बाद. सो आज का जो मैंने प्लान बनाया है, आई हैव 4 शीट्स टू शेयर विद यू. शीट 1 जैसे कि आप देख रहे हो, हम लोग बात करेंगे प्रोनोमिनल वर्ब्स की और उनकी कॉन्जुगेशन. एंड नीचे मैंने कुछ वर्ब्स दिए हुए हैं. एंड सेकंड शीट, उसमें डेली रूटीन हम लोग अपनी कैसे डिस्क्राइब करते हैं. 2 शीट मैंने उसके बारे में बनाई हैं. एंड थर्ड शीट, आई हैव थर्ड ग्रुप वर्ब्स कॉन्जुगेशन फॉर यू, अलॉन्ग विद जो डेली रूटीन में मैंने कुछ वर्ड्स यूज़ करे हैं उसकी भी मैं आपको वोकेबुलरी दूंगा. Now, before I proceed, it's a very important thing, back and forth strategy. Now, back and forth strategy से ये मतलब है कि आपको रिवीजन डेली बेसिस पे और बहुत मेहनत करके करनी पड़ेगी. नहीं तो फ्रेंच में क्या होता है, और कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए डेली आपको कुछ ना कुछ नया मिलता जाएगा. एंड यू नीड टू रियली learn the previous concepts and then application of the same along with some new concepts. So पुराने concepts की application तो साथ साथ रहेगी हर एक particular lesson में, जो भी मैं आगे आपसे share कर रहा हूँ. साथ ही साथ उसी sheet में नए concepts भी आएंगे. So unless you keep on revising, you keep on learning the vocabulary, you keep on learning the grammar, revisit various rules, the concepts, यू आर गोइंग टू लैग बिहाइंड. सो आपको ज़्यादा मेहनत करनी है और डेली का कम से कम 1 आवर 2 आवर आपको स्पेंड करनी है इफ़ यू आर रियली सीरियस अबाउट लर्निंग फ्रेंच एंड क्रैक A1 और A2 डेल्फ एग्ज़ाम. एंड जैसे मैंने आपको बताया, ये पहला जो हमारा प्रोग्राम रहेगा थ्रू आउट डिफरेंट वीडियोज़. वी आर गोइंग टू cover till A1 and then going beyond that till A2. एंड ऑफ कोर्स अगर आप डेल्फ एग्ज़ाम नहीं भी देना चाहते, स्टिल वी आर गोइंग टू लर्न फ्रेंच इन अ वेरी क्विक मैनर. मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि आप इकट्ठी वीडियोस बना के देन स्टार्ट शेयरिंग, एंड आई नेवर डू दैट. Language learning is like a flow simultaneously. You need to come up with something spontaneous. एंड जो दिल से आपके एक्सप्रेशंस निकले, जो भी वोकेबलरी निकले, दैट इज़ वॉट इज़ द कम्युनिकेटिव पावर ऑफ द लैंग्वेज. मैं इकट्ठी बना के रख लूँ 50-60 वीडियोज़ और एक एक करके शेयर करता जाऊँ, दैट इज़ नॉट गोइंग टू सर्व द पर्पस. इट्स ऑन डेली बेसिस. मैंने पिछली शीट में क्या किया, पिछले पर्टिकुलर वीडियो में क्या शेयर किया, आई रीविजिट दोज एंड देन आई start sharing and make the sheet specifically for you. And I never do that in my daily lessons because then you are only doing the quantitative aspect. So qualitative aspect is very important in any subject and especially when it is a language learning. Now ये वाला जो मॉड्यूल है, ये मैं डेली बेसिस पे जो मुझे कॉन्सेप्ट आता है, I just download it on the paper and share it with you, and I'm sure it is going to intersect with your thought patterns and feelings as well. So here we go. The first sheet, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं प्रोनोमिनल वर्ब की. Le verbe pronominal. प्रोनोमिनल वर्ब्स का मतलब ये होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ वन पर्सन ओनली. इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट. आप इसको ग्रामेटिकल वे में ना समझने के बजाय आप ये मान के चलो, व्हेन आई हैव अ वर्ब से réveiller, दिस मीन्स टू वेक अप. बात ख़त्म. एंड अब ये क्यों है, ये वैसा क्यों नहीं है, इन चीज़ों में हमें नहीं पढ़ना अनलेस एंड अनटिल आप लैंग्वेज टीचिंग में जाना चाहते हो. सो there is a set of verbs in French, especially those which are used to describe our daily routine, जिनको हम pronominal verbs कहते हैं. And it's something like reflexive verbs. जैसे मैं कहता हूँ I am speaking French, so I is the subject and speaking is the verb, and speaking what? French. So French is the direct object. Now when I say I wake myself up, so that means it is a
Reflexive verb because who am I? I is the subject, and whom I am waking up? It's myself. So subject and object are the same person. So that is what reflexive pronouns or pronominal verbs are all about. And 98% of French verbs they end in er. सो दैट मीन्स ये वाले वर्ब्स भी हमारा एक पैटर्न लेके चलेंगे सेम जैसे ई आर वर्ब्स हैं ई एस ई then we have ONS, EZ and ENT. Another tilt here is that you have to keep in mind is this sir will go for a change to ma, the and remain as sir with je, tu, il, el, on, and it changes to nu, then vu, then sir again and sir with L third person plural. So when I want to say I wake up, I will say je me réveille. Now it's an important again rule, the pronunciation rule here. When you have I double L and then E, so the sound of double L is something like E. Here is very soft, but when you pronounce it in a word, it is seldom, it's just not easy to come up with the. I won't say je me réveille. No. So you have to keep it in mouth. Je me réveille. It's something like you can come up with a. So je me réveille. Tu te réveilles. So il se réveille. Elle se réveille, on se réveille, nous nous réveillons. Now réveillons, EI is always pronounced as A. Yeah, we discussed that rule. Even AI is also pronounced as A. Yeah. So keep in mind, like avoir, we did the conjugation of verb avoir. Vous vous réveillez, EZ is A, we have done that. Il se réveille, this is silent. Elle se réveille. So here, and I have given you some pronominal verbs. If you notice, these are all related to our daily routine. So we have se laver, to wash oneself, se lever, to get up, se coucher, to go to bed, s'habiller, to get ready. Now see here, H is silent and double L is again E, I can't say habiller, ye, no. So it sounds very weird. Now only thing is, when we are learning the language from the very basic rules as far as the pronunciation is concerned, so we know that it's ear, but when I pronounce it in a word, it will be habiller. So ear is almost in the mouth, but just for the knowledge sake, we must be knowing that I double L, the sound of double L is ear. So ear doesn't really come up so well. Suppose I have the word fear. Fear is girl, right? It's girl and its daughter also. So fear, or I can prolong this E, fee, that's also accepted. So don't put more stress on je. So double L is, you can say fear, right? So then you have s'habiller, to get ready, because when I speak, A takes the entire sound pattern. It goes like this, s'habiller, right? S'habiller. So that double L is somewhere lost here. So that's how it's a very rhythmic language. And so when I have se promener, to go for a walk, s'amuser is to have fun, se reposer is to relax. So then I have just given a kind of application of these verbs in describing daily routine. Daily routine in French is ma, this is my, ma, my, journée, daily,
typique. Ma journée typique is daily routine. I have written typique here, and d'habitude is daily, but it's better if we say ma journée typique, right? So I have the word here d'abord, d'abord, je me réveille à 6 heures. Je me lave et bois du lait. Après ça, je m'habille et je sors ma maison à 8 heures. Remember, this is our time concept, and we write it in the short form like this. J'arrive au bureau à 8h55. So even if we don't write minutes, it is understood. So that is how you write minutes. Otherwise, the spelling of minutes is same like in English, but we pronounce it as minute. Remember, plural S is silent. And now the question might arise, I and why are we not pronouncing it as a? Right? We discussed that in the word sank. You remember? Sank, a. But here, after minute, I mean to say, after in, you have you. Now, if I make a nasal sound here, that will be something like mayut. No, so that doesn't connect rhythmically, phonologically well. So that means there won't be a nasal sound here. So what happens is, if after M or N you have a vowel, then nasal sound won't be there. So you need to pronounce M and N separately, like in the case of minute. So N is being pronounced, and I will take its own original vowelic sound E. Right? So 8h55. Je travaille. See, AI is A and double L is again A. Travaille. A bit of year would come, but it's through practice that you are able to connect with it. Je travaille. Jusqu'à. U. Sk. QU is always K. Like in English, if you see many words where you have Q, it is always followed by U, like queen, quiz, quilt, and so on. So same is in French and other Latin originated languages. And the sound of J is, we had discussed, it's je, jusqu'à, till here, until. Jusqu'à means until, and travailler is to work. So our initial verb was travailler with ER. So we have deleted R because as per the conjugation, first person singular. So I work or I am working. Remember, it won't be je suis travaille. Je travaille means I work and I am working both. That means it is equivalent to present simple tense and present continuous tense. Then I have j'arrive. So our verb is arriver. So first group verb again. So this is deleted and E has been inserted. J'arrive. I arrive, I reach. So it's again a cognate, right? Chez moi, at my place. This entire thing means at my place. So chez, CH is always sh, EZ is A. So chez is a very important preposition in French. Chez moi, at my place or at my house. À 5h45. Puis, UI is V, puis, S is silent. Puis is then. Je me repose. Je me repose. I says relax, or pour, OU is ou, and very important preposition in French, and pour is for. So
Then I have sheet number 3 for you. So our sentence was Je me repose pour quelques, see, que, elle, que. OI is wa. So this becomes quelquefois. Quelquefois. Something like this. Quelquefois, sometimes. Quelquefois means sometimes. So then next sentence begins environ. On, re, I, ver, en. It's en or on as we discussed previously. So environ. This is approximately or around. So आपको साथ साथ ये verbs बहुत important words हैं. Sorry, not verbs. These are words. Invariable words that could be used. So you have to build up this vocabulary. And environ à 7 heures, je me promène. I go for a walk. Our verb is se promener. So we have deleted this R, and instead of se, as we had discussed in the first sheet, our model verb was se réveiller. So we have je me réveille. So we have je me promène, right? So you have to just keep the note of SE will change to me to se, nous se. So nous réveillons, we wake up. If I say nous promenons, we go for a walk. And I can also say, remember, on se promène, we wake up. On se réveille and nous réveillons. They both mean the same. So, je me promène. Then I write, je reviens. Reviens means come back. Et regarde. Regarder was the verb. Je regarde la télévision. Similarly, here our verb is re, ner. This is our third group verb. जो मैंने लास्ट शीट में आपके लिए कुछ इसमें रेगुलर वर्ब्स यूज़ हुए हैं. आई एम गोइंग टू शेयर दैट विथ यू. सो je reviens et regarde la télévision. I come back and watch television. So regarder is to watch or to see. Ensuite, again very important word for you. Ensuite. Ensuite or ensuite afterwards. À 9 heures ou 9 heures 15. मैंने एक वर्ड बोला ऊ, इसका मतलब है और. एंड इफ आई पुट अ ग्रेव एक्सेंट, दिस पर्टिकुलर एक्सेंट जो मैं अगली बारी बात करूँगा आपके साथ, ये एक्सेंट्स के नाम. सो यहाँ पर इट बिकम्स वेयर, राइट. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कहाँ पर हमें ये एक्सेंट लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना. दूसरा इम्पॉर्टेंट थिंग आपने नोट किया होगा, आई सेड नवर. नवर ये जब मैंने कनेक्ट किया, नाउ व्हेन यू हैव दिस वर्ड एंडिंग इन एफ, द नेक्स्ट वर्ड बिगिंस विद द वॉवल, सो द साउंड ऑफ एफ becomes v instead of f. सो मैंने बोला नवर, आ नवर. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो A1 में आपको बहुत हेल्प करेंगी. इंस्टेड इफ यू से नफ, इंस्टेड अगर आप नफर की जगह नवर बोलते हो, या कोई ऐसा वर्ड आता है वेयर यू हैव अ वर्ड एंडिंग विद एफ एंड द नेक्स्ट बिगिंस विद द वॉल, सो एंड यू कम अप विद द v sound, the panelists are convinced that you know the nuances of the language so well.
जनरली ये लोगों को नहीं पता होता. नवर ou नवर कैंस. सो सिमिलरली एक और कॉन्सेप्ट है, एफ और डी की साउंड होती है. सपोज ये वाला वर्ड जो है मेरा डी में एंड हो रहा है, एंड अगेन द नेक्स्ट वर्ड बिगिंस विद द वॉवल. उस केस में डी की साउंड त हो जाती है, राइट. मेरे को अभी जैसे माइंड में आएगा तो मैं आपको वो वर्ड शेयर करूँगा, नहीं तो नेक्स्ट लेसन्स में ऑफ कोर्स इट विल कम. सो नवर कैंस. Ensuite, à 9h15, on mange, और यू कैन से nous mangeons. यहाँ पर मैंने दोनों कंस्ट्रक्शंस आपको दिए हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो. बट जस्ट रिवीजन हियर, नू के साथ हमने डिस्कस किया था विद GER verbs यू हैव टू पुट ओ अगेन, एंड अगेन विद रिवीजन CER में वी हैव टू पुट C से डीला and then ONS. So here I have put E, right? So if I don't put that, it will be mangon. So nous mangeons बोलो या on mange. So on mange le dîner. So you can make it out spelling say dinner. Then you have the word enfant. Enfant, or you can say enfin. अलग अलग वेरिएशंस हैं. Je me couche. So your verb is se coucher. Se coucher is to go to bed. See, couch, something like that. So it's so close to English. So je me couche à 10 heures. So I go to bed at 10 o'clock. अब मैं लेके आ रहा हूँ आपके पास शीट नंबर 4, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये आपको लर्न करने हैं वर्ब्स की कॉन्जुगेशन. सो थर्ड ग्रुप वर्ब कॉन्जुगेशन जो अभी हमारे साथ डेली रूटीन डिस्क्राइब करने में आए. सो वन इज़ sortir टू गो आउट, venir टू कम, aller टू गो, passer टू वे, boire इज़ टू ड्रिंक. पज़े हालांकि हमारे डेली रूटीन में नहीं आया था, बट उसके पीछे एक रीज़न है. मैं ये वाला क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो वर्ब आया था दैट वाज प्रोमने, स प्रोमने, एंड यू मस्ट हैव सीन वहाँ पर हमारा एक एक्सेंट लग गया था प्रोमने. सो व्हेन आई कॉन्जुगेट दैट इट वाज य म प्रोमैन. वही कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आई हैव गिवन यू this verb so that you are able to understand. So यहाँ पर I have the pronouns je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle, and then you can just learn this. So je sors, tu sors, il sort. Same sound throughout. Nous sortons, vous sortez, il sort, or il, elle sortent. When I learned French in 1986, so we were told that the T will be silent in third person plural as well. But I have seen over the last few years, people have started pronouncing this also. So nous sortent. So दोनों ठीक हैं. Then je viens, tu viens, il, elle, on vient or vions. Both are correct. Same sound here, here, here. Nous venons, vous venez, il, elle, viennent. This ENT is always silent, remember. Viennent, E followed by two consonant again becomes the sound A. Then aller is a very very important verb, so it is conjugated as je vais. You remember the expression comment allez-vous, how are you? So हम रिप्लाई करते हैं je vais bien. सो इट्स समथिंग वेरी क्लोज टू हिंदी. हिंदी से आपको को इतने क्लैरिटी मिलेगी. फ्रेंच और हिंदी में कई एक्सप्रेशंस, कई चीज़ें यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट सो वेल विद इंग्लिश एज विद हिंदी. सो और कैसा चल रहा है, समथिंग लाइक दैट. यू से कोमत आली, वो क्या हाल चाल, कैसा चल रहा है. आले इज़ टू गो. je vais, tu vas, il, elle, on va, nous allons, S is connected with A. Vous allez, the sound is important. Ils, elles vont. Passer is to weigh. So je pèse. If you notice, you have a grave accent, this on E, and the sound of E becomes A, like in anak. Tu pèses, il, elle, on pèse, nous pesons. यहाँ पर ये एक्सेंट चला गया. वो पज़े,
Il again pèse. This is what we have to learn. Any verb ending in er, this thing happens generally in er verb, and it is preceded by s, and again there is another e before s. This could be any consonant, right? कुछ भी एस के बजाय कोई और कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, लेकिन इसके बाद ई आर है और इस कॉन्सोनेंट से पहले ई है, सो इस ई में ये वाला एक्सेंट लगता जाएगा, सिवाय नू और वू में. अगेन फोनेटिक प्रिंसिपल मैं आपको बोल के बताता हूँ. अगर हम इसके ऊपर ग्रेव एक्सेंट नहीं लगाते तो क्या साउंड रहेगी? j paz, tu paz, il paz, nu pazon, vu paze, il paz. So paz doesn't sound rhythmic. So to make it rhythmic and it may be pronounced, अगर मैंने ई पे ग्रेव एक्सेंट लगा दिया, सो ई को मुझे ए बोलना पड़ेगा. सो दैट मीन्स j pèse. See, it's so beautifully phonologically structured, this language. Tu pèse, il pèse. Now if I say nous pèsons, एकदम सीधा जा रहा है. सो टू मेक इट मोर flowing, nous pesons. See, it connects with that. So vous pesez, no, it becomes very static and very harsh. So vous pesez, il pèse, flow. This is to weigh, this is to drink. So je bois, tu bois, il, on boit, nous buvons, vous buvez, il, boivent. सो पैटर्न अगर आप देखोगे, एक तो पैटर्न ये हो गया, य त्यू में सेम है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था. नू वू और il थर्ड पर्सन में आप देखोगे ONS EZ ENT, ये भी सेम है. देन जनरली टी आ गया, इधर भी टी आ गया, एंड ये हमारा फर्स्ट ग्रुप वर्ब है, एंड इधर भी टी आ गया. सो जो भी चेंज हो रहा है वो बीच के कॉन्सोनेंट्स में होता है. यू कम अप वेरी वेल, आई एम श्योर, आफ्टर जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे. नाउ हियर आई हैव दोज words which are very important to build up your paragraph, whatever you write in French. So jusqu'à is until or till, jusqu'à. Chez moi, my place. D'abord, at first or first of all. Après ça, après is after, ça, that, puis, then. Enfin, finally, or at the end. Ensuite is afterwards. So that is it for the day. Et pratiquez et révisez beaucoup. Et à demain. Merci.